Hello guys, good morning. Everything clear? Good morning everyone. Is everything clear? Good morning, good morning, good morning. कैसे है बाबू चपंडी? गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है? सुधा 5 into गुड मॉर्निंग, 5 स्टार गुड मॉर्निंग. अरे बाबा आटा गारू, क्या हो गया रे? 5 स्टार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आई एम गुड फिल, आप कैसे हैं? सो वेल हाइड्रोलिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. स्पेशली कुछ लोग तो वेल हाइड्रोलिक्स जियोटेक्निकल में बात करेगा, कुछ लोग तो एनवायरमेंटल में बात करेगा. बट वेल हाइड्रोलिक्स इज रिलेटेड टू 100% हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी ओनली. आपको डाउट होगा गेट सिलेबस में चेक करो. गेट सिलेबस में इट वाज गिवन इन वेल हाइड्रोलिक्स, गिवन इन हाइड्रोलॉजी ओनली. यस, यू कैन कंटिन्यू बबलू गारू, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकता है इधर. पूरा 100% कवर हो जाएगा, पूरा 100% कवर हो जाएगा बेटा. चैप्टर 11. तुम क्या रहे? अच्छा गारू, क्या तुम मींस? सो चैप्टर 11 बात कर रहे हैं हम. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रेश वाटर. 30% of world's freshwater resources. 30% of world's freshwater resources is groundwater. So 30%. Our friend, अरे ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा बाबू. So 30% of world's freshwater is considered to be groundwater. So in absence of surface sources, in absence of surface sources, so what is our alternate source? The alternate source for freshwater is groundwater only. Alternate source for freshwater is nothing but groundwater only. No other opportunity. No other opportunity. हमको रिवर या लेक या स्ट्रीम में बिकॉज ऑफ ड्राउट, बिकॉज ऑफ सम अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, पूरा का पूरा पानी तो पूरा का पूरा ले लिया, टेकन कंप्लीटली, इट वाज एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली. So in such a case, only one and only option we are having is groundwater. One and only option we are having is groundwater. So what is groundwater? What is groundwater? Water available in the soil mantle. Water available in the soil mantle is called as groundwater. हम पहले हाइड्रोलॉजी का बारे में बात करने के टाइम पे ऐसा बोल दिया, हाइड्रोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ सरफेस वाटर एंड सबसरफेस वाटर. क्वेश्चन भी कर लिया इनके बारे में. हाइड्रोलॉजी डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्सेस? Hydrology deals with both the surface water and subsurface water. What is that subsurface water include? That subsurface water is nothing but groundwater. Groundwater. So when you consider this is the earth crust, ground level. एक ground level का नीचे क्या होता है immediately? We call it as zone of aeration. Zone of aeration. And below that whatever available till impervious rock strata, it may carry subsoil, it may carry capillary spaces and water, it may carry water table. Completely we call it as zone of सैचुरेशन. जोन ऑफ सैचुरेशन में रहता है, कैपिलरी स्पेसेस रहेगा और इनका अंदर पानी रहेगा. नाउ वाटर इज अवेलेबल, दिस इज वाटर अवेलेबल, इनका अंदर भी पानी चलता है. दिस इज कंप्लीटली ग्राउंड वाटर टेबल. दिस इज ए वाइड वाटर जोन. दैट इज जोन ऑफ सैचुरेशन. सो नाउ ये ड्रा करना पड़ेगा बेटा. यस, यू हैव टू. सो व्हेन यू टेक जोन ऑफ एरिएशन ना, ऊपर से एटमॉस्फेयर से आने वाला टेंपरेचर, प्रेशर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स विल कंट्रोल जोन ऑफ एरिएशन. बट जोन ऑफ सैचुरेशन को किसी भी कंट्रोल नहीं करेगा. सिर्फ ये सॉइल का अंदर प्रॉपर्टी है. It depends on rainfall, not temperature, pressure, infiltration, rainfall, runoff, hydrological properties. Zone of saturation depends on hydrological properties. Zone of aeration depends on weather property. External weather property will control. External weather properties control. But zone of saturation, hydrological phenomena will control. Runoff, infiltration, those only will control because how the water will come. Impervious strata, that should be at the end. Some after groundwater table there should be rock strata, impervious rock strata. So आप environmental पढ़ लिया ना केपी सर से, लेयर्स के बारे में, सबसरफेस वाटर सोर्सेस में बात किया ना बाबू. इतना अच्छा डायग्राम ड्रा करके जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरिएशन, व्हाट वाज जोन बात किया ना. दैट वन ओनली. दैट इज impervious zone of rock flowage we have written. Zone of rock flowage we have written. This is zone of rock flowage. This is zone of rock flowage. Rock strata, impervious rock strata. So zone of aeration is controlled by weather properties. Zone of saturation is controlled by hydrological phenomena. Hydrological phenomena. This one. So below ground level we are talking. Below ground level, whatever water available, that should be said to be zone of saturation. Zone of saturation. That saturation formations in earth strata, geological strata.
saturation formations in geological strata, classified into 4 types. So it has been classified into 4 types of saturation formations in geological strata, classified into 4 types. So first one is aquifer. इनका बारे में बहुत ज्यादा बात किया ना हम. Sources of water, aquifer. Zone of saturation is said to be aquifer. कब? Aquifer is porous strata and permeable strata. Means it can absorb the rainwater. बारिश आ रही है ऊपर से बारिश आने के टाइम पे सॉइल का पूरा एब्जॉर्ब करेगा और परमिट करेगा. इट कैन अलाउ टू फ्लो. यस करेक्ट भाई. मैक्सिमम स्टोरेज एंड मैक्सिमम यील्ड. सो ये पोरस एंड परमिएबल होता है. मैक्सिमम यील्ड मैक्सिमम स्टोरेज होता है. पोरस एंड परमिएबल होता है. स्टोर ड्रेन and yield. Store, drain and yield water. Store, drain and yield water. So it can absorb more, store more. Yield पता है what is meaning of yield? Yield is giving out. ये soil strata का अंदर सुनो, इधर हम एक well construct किया. This is a zone of aquifer. We constructed a well. पानी तो well को देना पड़ेगा ना. Yielding water towards the well, giving water towards the well. समझ आ रहा है? Yielding means generally हम ऐसा सोचेगा. Yield means we can get. No, we are giving out. Yielding means giving to the well, giving to the lake, giving to the river. Yielding. So maximum storage and maximum yield. Maximum storage and maximum yield होता है इधर. Correct संयम. So best soil क्या होता है aquifer को? The best example for aquifer is sandy soil. Best example for aquifer is sandy soils. Sandy soils. Then second one, aquitard. Aquitard बोलते हैं इनको. Aquitard भी porous है. It can absorb the water. Porous होता है. Semi permeable. It can't give the total water. It can't give the total water. Little water only, less yield. Maximum storage, minimum yield. So what it can do? It can store and yield a little water. No drain. We are not writing drain here. Store and yield little water. Store and yield little water. समझ आ गया? Store and yield little water. तो इनको क्या होता है example? What is example for aquitard? हमारा पास देखो एक बार. These are sand particle. Okay. Sand का voids बहुत अच्छा हो गया. Sand का voids बहुत अच्छा हो गया. पानी पास हो रहा है. Easily water can travel ना. So water is coming over it. Water is coming over it. It can absorb. Water can be drained, yielded towards the strata. Water can be drained and yielded towards the strata. अच्छे से होता है ना. अच्छे से होता है ना बेटा. देखो अभी this is sand. Same sandy soil होता है. Same sandy soil is there. Now इनका ऊपर clay आ गया. इनका ऊपर means in between the voids it is mixed with the clay. Within the layers. Yes, within the layers. So पानी आ गया. Obviously absorb करेगा. Obviously अंदर आएगा. But passage तो बहुत कम है. इधर से उधर horizontal transmission नहीं हो रहा है. उधर भी घूम रहा है. उधर भी घूम रहा है soil का अंदर पानी. So yield less water बोल दिया ना. Yield less water. So that is sandy clay soils. Sandy clay soils. Sandy clay aquitard. Sandy clay होता है aquitard. हो गया. चलो third one, aquiclude. Aquiclude, very clear. Porous and impermeable. Porous and impermeable. Store, but does not yield water. Zero yield. Does not yield water. ये तो सुधा जैसा होता है. सुधा अंकुल हमसे कभी भी आटा पूछ के ट्रक्स का ट्रक्स ले रहे आटा. एक दिन भी हमको 1 kg आटा नहीं दे रहे. कृष्णा गारू को 1 kg भी नहीं दिया. So every day he is taking आटा. Every day हर एक दिन 2-3 ट्रक ले रहा है. So 1 kg आटा भी नहीं दे रहे. Same. This aquiclude can take liters and liters of water from the atmosphere. सिर्फ 1 लीटर भी डोनेट नहीं करेगा वेल या लेक या रिवर को. So कंजूस वाला आदमी होता है. कंजूस वाला. So best example is clay soil. So this is a previous gate question. 3 बार पूछ लिया इनके बारे में. Example for aquiclude is. Example for aquiclude is 3 बार पूछ लिया गेट में. Very important clay soil. Clay soil is like Sudha uncle. Then last one, aquifuse. Aquifuse में क्या होता है? Neither porous nor permeable. Means no yield, no storage. No storage, no yield. Zero water travel. अरे zero water travel कहाँ मिलेगा हमको? Rock strata, granite marble होता है ना? This rock strata will come under it. This rock strata will come under it ना? चलो, is that clear? Clear 4 types: aquifer, aquitard, aquiclude, aquifuse. Aquifer, aquitard, aquiclude, aquifuse. So हम human being को use करने वाला कौन होता है चारों में? Among the 4, which will be useful for human, which can give more water for us, which can give more water for us, that will be useful. Which can give less water for us, that is not useful. Which can give more water, that is aquifer. That will be aquifer. Which can give more water for us, that will be aquifer. Now we are talking about the types of
एक्विफर। टाइप्स ऑफ एक्विफर पता है ना आपको? अनकन्फाइंड एक्विफर एंड कन्फाइंड एक्विफर। अनकन्फाइंड एक्विफर एंड कन्फाइंड एक्विफर पता है आपको? पता है या नहीं? So unconfined aquifer we call it as water table aquifer. Water table aquifer. So इधर क्या होता है? Zone of saturation is not interrupted by any rock strata or aqueous fluid. Zone of saturation is not interrupted by any rock strata or aqueous fluid. It is fully aquifer only. It is fully aquifer only. Means this is ground level. ये तो ground level है. ये aeration zone, zone of aeration, zone of saturation, water table, rock strata. In between nothing is there. In between nothing is there. So any disturbance? Have you seen any rock in between the zone of saturation? Have you seen any clay in the zone of saturation? Have you observed anything in the zone of saturation? Completely it is zone of saturation carrying soil water strata and groundwater table. That's it. Soil water strata and GWT groundwater table. Nothing more. No disturbance. So water travels under, water flows under gravity only. Gravity only. Whether it may go down under the influence of gravity, whether it rise up against the gravity. That's it. Capillary rise हो गया इनका अंदर. Capillary rise against the gravity होता है. Go down, that goes under influence of gravitational force. No pressure here. No pressure force. You understand clearly what is unconfined aquifer if you get to know what is confined. पहले आपको confined समझ होने के बाद समझ आएगा. Any star in this line? What are you asking? I'm not getting अच्छा गारू. Okay. So when we talk about confined aquifer, this is also called artesian aquifer. Confined aquifer, artesian aquifer. Confined aquifer, artesian aquifer. So this is ground level. This is ground level. So as usual, what is coming immediately? What is coming immediately? Zone of aeration. Zone of aeration only coming. So as usual, what is coming after that? Obviously, it has to come with zone of saturation, voids, soil particles with fully flooded water, fully saturated water. So after that, voids containing lot of fully flooded water and soil particles. What should come next? What should come next? Please tell me. What should come next? Please tell me, guys. Water table तो आना पड़ेगा ना? अरे water table ना आशीष गारू. Water table तो आना पड़ेगा ना? Water table. Water table has to come ना? Yeah, as a regular water table has to come. But now here, as a regular water table has to come. But here it is showing a clay strata. Here it is showing a clay strata. So clay. After clay, water table is coming. So see, this is actually we are analyzing in so many questions in geotechnical. Sand, clay, water table. Below that, impervious rock strata. So those who learn consolidation, effective stress concept, you understand this. We have different layers. Ground level के बाद sand layer के बाद clay layer. What is a clay? What is a clay? Aqueous fluid. Will it allow passage of water? Will it allow passage of water? Impervious only, na? Aqueous fluid is impervious, na? And this is rock strata. What is rock? Aquifers. So two impervious strata exist. Where is water table? Where is aquifer? Now this is aquifer. Aquifer exists between two impervious strata. Aquifer exists between two impervious strata. Same. Maybe sometimes not clay. Sometimes not clay rock will come. But this is not the end rock. This is a small rock strata, aquifers coming. Aquifers coming. Water is flowing. Regular impervious rock strata again. This is impervious strata. So this is rock. In between water table. Again, this is aquifer. This kind is called confined aquifer. So now you understand well now what is unconfined. Nothing is there. Continuously starting to ending saturation zone only. Saturation zone not at all disturbed anything. But here, this is also aquifer, sandy layer. This is also aquifer. But aquifer was interrupted by either clay strata or rock strata. Obstacle. Yes. Understand now. What is confined aquifer? Understand now. Clear to everyone? और किसी को डाउट है इनके बारे में? No doubt. इसमें कुछ भी हो सकता है. Soil to soil, location to location. राजस्थान होगा तो राख मिलेगा.
महाराष्ट्र होगा तो क्ले मिलेगा, आपका कब्रिस्तान में क्या मिलेगा हमको पता नहीं। चलो, यस क्ले कैन एब्जॉर्ब वाटर बट डज नॉट गिव ना, क्ले कैन एब्जॉर्ब वाटर बट डज नॉट गिव ना बेटा, उपाध्याय गारू। अरे पैसा तो मिल रहा है, इनको आटा नहीं मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है खाने के लिए। रॉक्स हैविंग मोर कैल्शियम बट कैल्शियम इज बिकॉज ऑफ बोन्स ना, अच्छा गारू। चलो, वो तो कभी भी नहीं मिलेगा मुक्का जी। डन हो गया सुधा अंकुल, सुधा गारू चपंडी। The zone of saturation having aquifer interrupted by impervious strata like rock or clay layers and make water in aquifer flow under pressure is called as confined aquifer. So water is flowing under pressure, so आप एक अनकन्फाइंड एक्विफर में वेल कंस्ट्रक्ट किया और एक कन्फाइंड एक्विफर में वेल कंस्ट्रक्ट किया, इसमें ज्यादा पानी मिलेगा, समझ आ रहा है? वेल विथ सेम डायामीटर सेम डेप्थ, dig into unconfined as well as confined, where you get more discharge. Obviously confined, no not unconfined. Divyanshu, Ankesh, Madhu, Harsh garu, because of pressure, pressurized flow, artesian pressure. Here you dig the well, here if you dig the well, here you are digging the well, water has to rise by themselves, no supporting force, capillary force, just capillary rise happen, and also it has to resist gravitational attraction. Gravity is trying to push down, so it first it resists the gravitational attraction, then slowly it can raise by itself by capillary raise. But if you dig a well over here, already water is flowing under pressure, top and bottom rock strata, impervious strata is there, already it is flowing under pressure. Immediately artesian pressure immediately raises the water, splits up like anything. So discharge of well in confined aquifer greater than discharge of well in unconfined aquifer. Confined aquifer yields more water than unconfined aquifer. Why? Due to artesian pressure. Understand? बोलो बबलू जी, स्लाइड चाहिए? अब सार बोलने के बाद लक्ष्मी गारू याद आएगा, सिर्फ लक्ष्मी को ये याद तो होता है, लक्ष्मी सार बोलने के बाद कुछ नहीं पूछेगा, इमीडिएटली गिव प्रीवियस स्लाइड। आज नहीं आ गया लक्ष्मी मैडम? बोलो अनवर जी। डीमार्ट हो गया, अरे शी इज बिजी इन शॉपिंग इन डीमार्ट। अच्छा गारू, अरे अनवर जी, whether we have to construct the borewell up to confined or up to unconfined, Anwar ji, not only Anwar, everyone please understand where we can construct a borewell, whether it is confined or unconfined. Satish, listen carefully. That depends on region to region, because if you want to construct till confined, in that ground level confined to be available, na? In that ground level confined to be, if it is only unconfined, what we can do? The layer is only unconfined, Sanya, what you can do? That depends on state to state, region to region, location to location. That is varying, na? That is varying, na? If I go for delta regions, you know what are delta regions? Listen. If you talk about delta region, where rivers are more, obviously unconfined aquifers are more in it. More zone of saturation, obviously unconfined aquifers are more. You can dig a small depth only, 100 meter, 200 meter, 300 meter में आपको पानी मिलेगा. Then if you pressure तो कम है, पानी भी कम आएगा. So that you have to put pump and motor.
You have to take up more water by putting pump and motor. Na? You can put pump and motor. You can give. That is the delta region. There are dry regions will be there. Dry regions will be there. In the dry regions, clay won't available. The second case possible. The second case possible like Rajasthan. Rajasthan. If you dig more, you get rock strata. Granite marble will come na. Granite marble Rajasthan. Are Rayalaseema. Satish garu. Mana Rayalaseema telusu kada. Andhra Rayalaseema. Stones వస్తూ ఉంటాయి. So you have to break the stone. You have to break the stone. Then water you will get. Stone to टूटना पड़ेगा. Stone को टूटना पड़ेगा. Then only you get the water. Then only you get the water because it carries the rock strata. Rajasthan marble is famous. You know. Rajasthan marble why famous? If they dig the earth, they can get the marbles there. They can get the marble stones. After cracking and going down the marble stone, they get the water table aquifer. So that region to region vary hota hai. If you dig in Hyderabad, if you dig in Pune, Bombay, what you get? You get clay. You get clay. Understand? Pune, Bombay, Delhi, Hyderabad, cities, city zones. You dig more, you get clay because it carry aquiclude zones. It carry aquiclude zones. So it will depend on region to region. Obviously, it will depend on location to location, region to region. Chalo, properties of aquifer. Properties of aquifer. Porosity. ये तो पता है हमको porosity n. N porosity. Ratio of volume of voids to volume of formation. So now here we are talking the formation as aquifer. We talk volume of aquifer. Ratio of volume of voids to volume of aquifer. So n is equal to Vb by V. This is general soil mechanics statement, formula and everything. As per hydrology, what is porosity? As per hydrology, n is equal to Sy plus Sr. So this is the formula they asked 3 times in gate examination. People may denote to soil mechanics. In soil mechanics, never we study n is equal to Sy plus Sr. People will say that 1 mark belongs to geotechnical. So that is not belongs to geotechnical. If you want to give Vb by V, that is geotechnical. The hydrologic formula, n is equal to Sy by Sr. Sy by Sr. Porosity n is equal to specific yield plus specific retention. Specific yield plus specific retention. Retention. ये बात करेगा. Specific yield क्या होता है? Specific retention क्या होता है? बात करेगा. Porosity is equal to Sy plus Sr. For example, this is our aquifer. Okay, ये तो हमारा aquifer है. इनको porosity से हमको पानी मिल गया 500 liter water in that small region. Okay, ये 500 liter में आप well construct किया, or you want to cultivate the plant, or you want to take out the water. ये 500 liter में 350 liters it is giving to you. But 150 liter you put pump and motor, you put highly absorbing water absorbing plants, you dig any well, कुछ भी नहीं दिएगा. ये soil इनके साथ रहेगा 150. So that water which is retained within the soil, even plants are ready to die, humans are ready to die, go and die. हमको ना चाहिए हमारा पानी. ऐसा soil का अंदर voids का ऊपर retain करके लेने वाला पानी specific retention. We call that water as hygroscopic water. Soil grains होता है ना, soil grains का ऊपर attach करके absorb करके होने वाला water. Hygroscopic water है, soil का ऊपर retain करेगा. इनको बोलते हैं specific retention बोलते हैं. Remaining water other than hygroscopic water, yes, can't be extracted. Can't be extracted. Whatever given, okay, take it like that. Whatever given by the aquifer, whatever given by the aquifer, that is called a specific yield. So how much maximum it is giving, how much it is maximum retaining. Total available water we said as porosity. Yeah. समझ आ गया? Amount of water yielded to well, given to plants, किसी को भी donate कर रहे. So आपका account में 1 lakh rupees are there. So 99,000 बैंक वाला किसी को भी दे सकता है when you give the check. But 1,000 rupees तो minimum deposit होना चाहिए बैंक में. ये 1,000 rupees का किसी को भी नहीं दिएगा. Even they are not giving to you also. You said I am hungry, मेरा पास पैसा नहीं है, मर जाएगा. मर जाओ, minimum deposit 1,000 maintain करना पड़ेगा. So that is a specific retention. Whatever given 99,000 specific yield. समझ आ रहे? अकाउंट क्लोज मीन साइल को क्लोज करना पड़ेगा. अब साइल को क्लोज करना पड़ेगा. सुधा से मांग लो ना बेटा. You can ask them Sudha. चलो. So now n is greater than 20%. Porosity greater than 20% means in the total volume of aquifer, voids are occupying greater than 20%. Means water is occupied in the voids, and obviously if you talk aquifer, you please first understand total volume is 100%, total aquifer volume. In that 20% is occupied or more than 20% is occupied by voids. Voids में क्या होता है? Aquifer का voids में पानी होता है. We are talking about aquifer, not aquitard, not aquiclude and aquifuse. पानी होता है. So ये अच्छे aquifer होता है ना, sufficient water ना. So it contain greater than 20% of porosity. It contain sufficient water. पानी तो बहुत अच्छे होता है इनका अंदर. ये aquifer का अंदर पानी बहुत अच्छा होता है. Aquifer का porosity greater than 20%. कुछ लोग बोलते porosity 100%. Porosity 100% ना मिलेगा बेटा. Some people will write 20 to 100. 100% porosity means soil क्या होता है? Soil zero. ये hole होता है, hole. Soil नहीं. Hole होता है ना, hole. It's not soil. It's not कुछ empty space. हाँ. So maybe 20, 25, not more than that. Maybe 30 also, maybe 40, not 100. 100 तो possible नहीं होता है. हाँ. 5 to 20%. Porosity 5 to 20%. Moderate water. Porosity less than 5%. Low water. So obviously हमारा टारगेट वेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ एक्विफर होता है? हम वेल एक्सकवेट करना पड़ेगा. वेल एक्सकवेट करने का टाइम पे हम सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले वाला
greater than 20% वाला, we can go with greater than 20% only ना. स्पेसिफिक यील्ड SY, स्पेसिफिक यील्ड होता है SY. स्पेसिफिक यील्ड में क्या होता है? द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाटर yielded, volume of water yielded means extracted with respect to aquifer, yielded with respect to human, he extracting, human being is extracting water from the aquifer, so volume of water yielded, extracted, or unit volume of water, unit volume of aquifer. एक्विफर का यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट डेप्थ लेने के बाद यूनिट वॉल्यूम होता है. सो अप टू सर्टेन डेप्थ ऑफ एक्विफर, कंस्ट्रक्टेड डेप्थ ऑफ एक्विफर, यूनिट वॉल्यूम. सो SY is equal to volume of water extracted upon volume of water, sorry, volume of aquifer, so एक बात तो बोलना पड़ेगा इधर. I will give the picture, don't worry, I will give the picture to you, don't worry. ले लो स्लाइड, ले लो, पहले स्लाइड ले लो. सो दिस इज आवर एक्विफर, ये तो पता है आपको, यू नो दिस इज आवर एक्विफर. ओके, वेयर इज वाटर टेबल लोकेटेड? यहां से यहां तक वाटर टेबल लोकेट होता है. हियर टू हियर वाटर टेबल लोकेटेड ना, दिस वन. नो, ये सिर्फ आपको समझ होने के लिए ड्रा करना जरूरी नहीं बेटा, जस्ट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बस होता है. सो दिस इज द हाइट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल H1, हाइट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल H1. ग्राउंड लेवल से समझ लो, ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल तक डेप्थ, ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल तक डेप्थ होता है ना H1, दैट शुड बी H1 होता है, ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल तक. अब तो आप एक वेल, यू कंस्ट्रक्टेड अ वेल ओवर हियर, यू एक्सकवेटेड अ वेल ओवर हियर. सो दिस इज द वेल एक्सकवेटेड. पानी चलेगा ऊपर, ऊपर पानी चलेगा या नहीं? शुरू करेगा वाटर मूविंग इनटू इट, वाटर मूविंग इनटू इट. वाटर तो मूव हो रहे, वाटर तो मूव हो रहे ना. सो क्या हो गया अभी? बिकॉज वाटर इज मूविंग फ्रॉम देयर, इनका वाटर कम होता है या नहीं ग्राउंड वाटर टेबल का? because it is giving water to the well, giving water to the well. ground water table का पानी क्या हो गया? कम हो गया. now distance from ground water table, यहां से यहां तक इंक्रीज हो जाएगा ना. ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड वाटर टेबल तो डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है या नहीं? H2. so this is only na H2 minus H1, that is called change in ground water table depth. इनको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल डेप्थ बोलते हैं. हो जाएगा ना, ये समझ आ गया आपको? चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल डेप्थ क्या होता है, समझ आ रहा है बाबू? प्लीज कंफर्म मी वंस, प्लीज कंफर्म मी वंस. So now we can write here SY is equal to volume of water extracted upon surface area of aquifer, surface area of aquifer into delta GWT depth. हो जाएगा ना? surface area of aquifer into delta GWT depth हो जाएगा या नहीं? What is delta GWT? change in ground water table depth क्या होता है अभी? H2 minus H1. ये समझ आ गया? So what is from what volume of aquifer? From the total volume of aquifer, it is not taking full na. From the, this is the total volume, only this much volume it is extracting, this much volume it is extracting. Is it extracting full? Is it extracting full? It extract based on yield, it extract based on yield. अब तो आएगा देखो, volume of water extracted is equal to specific yield into surface area of aquifer, specific yield into surface area of aquifer into delta GWT. होता है या नहीं? into delta GWT. H2 will be till rock layer. If you are extracting 100%, that will be till rock layer. That is the total thickness. If you take H2 till rock layer, na, if you consider it is a till rock layer, then that will be thickness of aquifer. But are you making water table empty? Achha Garu? Are you making water table empty? Please tell me. Are you making water table empty? That is Z, thickness of aquifer. Wait. Let me finish now. You understand now. Let me finish. You understand now. So now, volume of water extracted will be taken as change in storage of groundwater table. We call this as delta groundwater volume. Now it will be okay for you now. So we have to finish the derivation completely. SY, surface of aquifer, surface area of aquifer into delta GWT. Because we are not taking total volume of aquifer, only change in volume.
change in volume. That is the total volume. That is to get the total volume. आप पूरा का पूरा extract तो नहीं करेगा ना मुसाफिर गारू. We are not ready to make our groundwater table empty. That will be infinite होता है Z. Z will be infinite हो जाएगा Z. Thickness of aquifer. Only we take extraction thickness. You please remember H2 minus H1 is extraction thickness. Z is total thickness. So it gives the total volume. So we need volume of aquifer from which extraction possible. Extraction possible होने वाला volume भी लेना पड़ेगा, पूरा नहीं लेना पड़ेगा. अरे टोटल होगा तो आपका घर का पूरा पानी वाटर टेबल से पूरा लेके चल जाएगा, मजा आएगा. बोलो रिमेनिंग आदमी को मजा आएगा क्या? यू आर टेकिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम एक्विफर, रिमेनिंग पीपल को क्या मिलेगा? यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट. हमारा वेल इतना पानी ले रहा है, इनका एक्सट्रैक्टेड वॉल्यूम चाहिए. हाउ मच चेंज इट विल कॉस्ट, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर अस. ये तो बेसिक फार्मूला से हम क्या निकल रहे हैं, ये तो बेसिक फार्मूला. दिस इज बेसिक फार्मूला, प्लीज अंडरस्टैंड. वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्विफर. कैन यू लिमिट, ये बात बताओ अच्छा गारू मुसाफिर गारू, ये तो बताओ, कैन यू कन्फाइन द डेप्थ ऑफ एक्विफर? यू नो वेयर रॉक स्ट्रैटा इज अवेलेबल. इट मे गो टू 2 किलोमीटर आल्सो. कैन यू टेक द टोटल 2 किलोमीटर? यहां से यहां तक 2 किलोमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल 2 किलोमीटर हो जाएगा. यू कैन टेक दैट. अरे इनका बारे में भी बात करें, अभी तक नींद में चले गए सौरभ स्लोप गारू. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना बेटा, सौरभ स्लोप अभी तक नींद में चले गए. अच्छा समझ आ गया? फ्रॉम दिस ग्राउंड वाटर टेबल, सो फ्रॉम दिस ग्राउंड लेवल, ठीक है एक काम करो, अंडरस्टूड. ओके यू डू वन थिंग, सुनो. यस भाई, ओके. वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड, गुड, अपॉन एक्सट्रैक्टेड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एक्विफर इनटू Z, टोटल थिकनेस. खुश हो गया? खुश हो गया? चलो नाउ चेंज इन ग्राउंड वाटर वॉल्यूम. हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए. वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड, वाटर yielded to well, yielded to well is equal to, yes भाई, सरफेस एरिया ऑफ एक्विफर. हाँ बोलो अभी. वेल पूरा का पूरा टोटल थिकनेस Z, 2 किलोमीटर पानी वेल का अंदर आ गया. बोलो मुसाफिर बेटा, हम अभी Z ले लेंगे. मींस you are allowing whatever total depth in that ground, fully you are giving to well only. Are you giving that? Is that possible? हम Z ले लेंगे या कुछ और दूसरा ले लेंगे इधर? हाँ समझ आ गया? अभी पूरा Z तो नहीं ले लेंगे ना. व्हाट वी एक्सट्रैक्ट दैट डेप्थ ओनली वी हैव टू टेक. व्हाट वी एक्सट्रैक्ट, हमारा वेल कौन सा डेप्थ से पानी ले रहा है, हाउ मच डेप्थ इट इज काजिंग द चेंज. हाँ हाउ मच डेप्थ चेंज इट कैन काज, दैट ओनली वी कैन टेक ना. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग डेल्टा ZWT. ओके समझ आ गया? अभी समझ आ गया? अभी और किसी को डाउट है? चलो थर्ड वन, स्पेसिफिक रिटेंशन, SR. स्पेसिफिक रिटेंशन SR क्या बोलते हैं इनको? दिस वन फिलगारो. फ्रैक्शन ऑफ वाटर retained by the soil, fraction of water retained by the soil against forces of gravity. Fraction of water retained by the soil. अरे ये लिख दिया तो ये, if you have written this is not required. सुधाकर, fraction of water retained by the soil against forces of gravity. SY represents what it represents? Hygroscopic water. Hygroscopic water in soil. ये पता है ना हाइग्रोस्कोपिक वाटर. सो दिस इज सॉइल पार्टिकल. इनका ऊपर अटैच करके फिल्म जैसा होने वाला पानी, फिल्म जैसा होने वाला पानी. सो SR represents hygroscopic water in the soil. So hygroscopic water is a film, thin film of water surrounding soil surface. So we'll discuss regarding this in irrigation. Whenever we start irrigation में ज्यादा बात करेंगे. We study lot regarding this irrigation. चलो completed. So you can write now SR is equal to N minus SY. SR is equal to N minus SY. इरिगेशन फर्स्ट देन जीरो. इरिगेशन तो आएगा, क्यों टेंशन नहीं चल रहा? इरिगेशन को वेटेज तो कम हो गया ना. दैट इज व्हाई इरिगेशन का वेटेज तो कम है. दैट इज व्हाई वी आर वेटिंग फर्स्ट. वो सिर्फ चाहिए फर्स्ट. बोलो अनवर गार, व्हाट इज योर डाउट? इन एन एक्विफर एक्सटेंडिंग ओवर 150 हेक्टार, 1101
What is 1101? Gaurav? Okay, 11 to 1. 11 to 1. Okay, understand. 11 to 1. Some people asking irrigation, some people asking OCF, some people asking CPM. So irrigation या OCF में final करके बता दूंगा. अरे पोल तो 50-50 होने के बाद again myself only to finalize. Tomorrow I will tell you. I will discuss with the academic team also. Okay. Tomorrow I will confirm. In an aquifer extending over 150 hectare, water table was 20 meter below ground level. सुनो, ये क्वेश्चन तो आपको फुल क्लैरिटी आएगा. ये क्वेश्चन से आपको फुल क्लैरिटी आएगा. सुनो ध्यान से. This is ground level. Water table is there ना, water table 20 meter below ground level. यहां से यहां तक 20 मीटर होता है water table. Now over a period of time water table dropped to 23 meter below ground level. So 20 meter से water table कहां तक पहुंच गया? 23 मीटर तक पहुंच गया. Over a period of time it was a drop down. अब तो change in ground water table depth क्या होता है? डेल्टा GWT क्या होता है बेटा? 3 मीटर होता है. डेल्टा GWT तो 3 मीटर होता है. अभी समझ आ गया? Because they won't give you what is the total depth. Total depth का information किसी को भी पता नहीं ना. It is infinite depth. It may be 2 kilometer, 1 kilometer, 600 meter, sometimes 20 kilometer. So that varies region to region. So drop down only हमको पता चलेगा. What is total thickness of aquifer हमको ये नहीं दिएगा एग्जाम में कभी-कभी. So now drop down is 3 meter. Porosity of aquifer is 0.4. Specific retention 0.15. Change in groundwater storage. So specific yield, porosity minus specific retention. We can write that 0.4 minus 0.15. 0.25 होता है. Now delta groundwater storage volume. Change in groundwater storage volume. SY 0.25. Surface area 150 hectare. 3 meter depth. Storage and volume both same बेटा. Groundwater storage से change हो गया ना. Groundwater storage से change हो गया ना. So this is in hectare. This is in meter. Question में भी hectare meter में पूछ लिया. No unit conversion required. 112.5 hectare meter. इतना अच्छे से हो गया. समझ आ रहे? सिंपल क्वेश्चन ना, सिंपल वाला. फिलगारू समझ आ गया बाबू? The volume of 3 into 10 power 6 meter cube of groundwater pumped out means taken out volume pumped out. Delta GWV 3 into 10 power 6 meter cube. Area 5 kilometer square. 5 into 10 power 6 meter square. Pumping lowered volume 102 to 99. Delta GWT 102 minus 99. अरे मुसाफिर गारू देखो, हम फर्स्ट फार्मूला लेने के बाद फुल थिकनेस ऑफ एक्विफर दिया और वाटर टेबल फॉल डाउन ओनली दिया. We are taking delta GWV, surface area of aquifer, delta GWT depth. 3 into 10 power 6, 5 into 10 power 6 into 3. अरे 1 by 5 is not 0.5. 1 by 5 is not 0.5 ना, 1 by 5 is 0.2. कुणाल गारू आप भी सुधा को फॉलो किया? ये बदमाश लोग हैं, इनको फॉलो मत करो. 1 by 5 is not 0.5. 1 by 5 is 0.2. हो गया? चलो फटाफट बोलो. एवरीवन कंप्लीटेड? आप सॉल्व करके बताओ ना. आई एम नॉट डूइंग. यू जस्ट डू इट एंड टेल मी द आंसर. अरे आप कुछ भी बोलो. थैंक यू. हम तो आज 2 घंटा ले लेंगे. Volume of water lost from storage is delta GWV. Specific yield into surface area into change in water table depth. Specific yield 0.2. Surface area 100 kilometer square, 100 into 10 power 6. Water table depth is a fall down 0.25. And they need this in million meter cube. So 10 power 6. 5 million meter cube. We are thinking what we can do with permeability and porosity. Permeability, porosity से सुधा गारू को आटा मिलेगा.
सिर्फ आटा या चक्कर मिलेगा, दोनों से कुछ नहीं, अननेसेसरी डेटा। हम ज्यादा सोचेंगे अरे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनसे टाइम वेस्ट। चलो two observation wells penetrating into a confined aquifer are located 1500 meter apart from the direction of flow. This one we will talk later. 1 minute. This one we will talk later. This one requires us. Homogeneous unconfined aquifer. Homogeneous unconfined aquifer of area 3 kilometers square. Area तो 3. Water table has an elevation of 102 meter after a natural recharge of 0.9 million cubic meter. समझ आ गया? सुनो. This is water table. So इनका area 3 kilometers square. Rainfall अंदर आ गया इनका अंदर. Rainfall. Okay. That rainfall gives 0.9 million cubic meter. Million meter cube. 0.9 million meter cube is given. So initially water table कहाँ रहता है? Initially ये तो ground level सोच लो. Take this as ground level. Ground level. Okay. Initially that is ground level. It is at an elevation of 102. It is at an elevation of 102 meter. 102 meter. इनके बाद क्या हो गया? Rises. Rises. So water table rises to 103.2. 103.2 meter. Okay. Why we are writing rise होने के बाद ऐसा? Because that is elevation level बोल रहे हैं, surface elevation level बोल रहे हैं. इनका वजह से वो पाएगा पानी ऐड करने के बाद. So you just understand 103.2 to 102. So how much is increased? Rose means rise only. Change 103.2 minus 102. Change is 1.2. Change is 1.2. So हमारा पास change है. Specific yield 0.9 into 10 power 6. Area 3 into 10 power 6 into 1.2. Specific yield मिलेगा? Specific yield मिलेगा? बोलो. Please कन्वे फटाफट. 0.2. अरे रुको ना, हम खत्म नहीं किया. हम खत्म नहीं किया, क्यों जल्दी जल्दी चल रहे? ये आधा भी कंप्लीट किया. पहले तो सुनो, स्पेसिफिक yield मिल गया 0.25. आफ्टर दिस रिचार्ज ग्राउंड वाटर पंपिंग टुक प्लेस. मींस पानी ले लिया, यहां से पानी ले लिया. ग्राउंड वाटर पंपिंग टेक प्लेस. वाटर टेबल फॉल डाउन टू 101.2, नॉट 02, 101.2 मीटर. अब तो वाटर टेबल कहां है? 102 टू 101.2 मीटर हो गया. वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड आफ्टर नेचुरल रिचार्ज. सुनो ध्यान से, पहले 102 मीटर, इनफ्लो ऐड हो गया, रिचार्ज 103.2 मीटर को आ गया. देन पानी ले लिया, सो पंप्ड आउट, देन 101.2 को आ गया. सो इधर रिचार्ज करने का टाइम पे क्या आ गया? 0.9 मिलियन मीटर क्यूब वॉल्यूम एंटर्ड. नाउ ये पंप्ड आउट वॉल्यूम क्या होता है? सो इनका डिफरेंस डेल्टा 103.2 माइनस 101.2, 2 मीटर डेल्टा हो गया. सो नाउ डेल्टा GWB SY 0.25, 3 kilometer square into 2 meter. You need million meter cube. No, that is 101.2 only. That is typing mistake. अच्छा करो. 101.2 meter भी ले लो. So you get 1.5 million meter cube. समझ आ गया? एक शॉर्टकट बना देंगे. We'll make one shortcut. अरे रुको ना आशीष भैया. हो गया? बोलो लकी का. आसान करेगा, बोल, वेट करो, रुको, बोल दिया ना. अच्छा जी, क्यों टेंशन में चल रहे? कंप्लीटेड सतीश? कौन पढ़ रहा है? इनसे पूछना पड़ेगा, नॉट विथ मी ना. एज पर सिलेबस, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू गेट सिलेबस पेपर. आई विल शो यू वेल हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलॉजी. क्योंकि हाइड्रोलॉजी का नाम पे भी ऐसा हो गया ना. वेल हाइड्रोलिक्स का नाम पे भी क्या हो गया? बोलो. सॉरी, हाइड्रोलॉजी का नाम पे स्टडी ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर. सरफेस का ऊपर होने वाला पानी, सरफेस का नीचे होने वाला पानी, दोनों में होता है. गेट सिलेबस चेक करो एक बार हाइड्रोलॉजी का अंदर. सुनो बेटा, 1 पहले क्या है? पहले 102 मीटर. कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 बार रिवाइज हो गया, ऐसा कुछ रहो ना, क्लियर. 2 बार रिवाइज हो गया, अच्छा हो जाएगा. 102 मीटर टू 103.2 मीटर.
103.2 मीटर टू 101.2 मीटर। नाउ इधर देखो डेल्टा चेंज क्या हो गया अच्छा जी चेंज क्या हो गया 1.2 मीटर, इधर चेंज क्या हो गया 2 मीटर। सो इधर तो 0.9 मिलियन मीटर क्यूब, इधर तो क्या आएगा सिंपल यूनिट, हमको सरफेस एरिया ना चाहिए, स्पेसिफिक यील्ड ना चाहिए, सिंपल यूनिट डेल्टा 1.2 0.9 डेल्टा 2 व्हाट इज, समझ आ गया। अभी आएगा वॉल्यूम 0.9 इंटू 2 अपॉन 1.2। शॉर्टकट आसान में मिलेगा, देखो एक बार इतना लंबा क्वेश्चन को एक स्टेप में खत्म कर दिया। आपको पूरा हर एक पी बाई क्यू बुक में ये स्टेप वाइज चलेगा, एवरी पी बाई क्यू बुक में स्टेप वाइज चलेगा, ऐसा भी दिएगा आंसर, सिर्फ हमारा नोट्स में होता है सिंपल यूनिट मेथड में चलेगा बस। 0.9 इंटू 2 बाई 1.2 खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद हो गया ना। थैंक यू अच्छा गारू। अरे देखो बेटा इसका अंदर लिख दिया, देखो एक बार, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी स्टडी स्टेट वेल हाइड्रोलिक्स एक्विफर्स एप्लीकेशन ऑफ डार्सीस लॉ। तो माय ड्यूटी आई एम टीचिंग हाइड्रोलॉजी, आई एम फिनिशिंग हाइड्रोलॉजी सिलेबस, सिर्फ वो कहां चले गए कहां नहीं चले गए हमको जरूरत नहीं है ना। चलो ये तो बाद में आएगा, ये तो बाद में आएगा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओके विल डू इट नाउ। सो नाउ विल टॉक अबाउट डार्सी लॉ। हाइड्रोलिक में एफएम ओसीएफ है ना बेटा संयम, हाइड्रोलिक में क्या है एफएम और ओसीएफ ना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डार्सीस लॉ। यस एवापोट्रांसपिरेशन कंजम्पटिव यूज का नाम पे इरिगेशन में होता है, बट एवापोट्रांसपिरेशन का इतना चिंता मत ले लो, सेम कंजम्पटिव यूज बात किया ना हम, सेम वाला। डार्सीस लॉ ग्राउंड वाटर मूवमेंट, सॉइल का अंदर पानी चल रहा है ना, ग्राउंड वाटर मूवमेंट and its studies governed by Darcy's equation, Darcy's law। ये Darcy's law क्या होता है रे बाबू? Darcy's law basically we say Q is equal to AV, Q is equal to AV। so now this V is velocity of flow in voids in soil, V, velocity of flow in soil, V। now that V is equal to KI, velocity of flow in soil, V is equal to KI। KI में क्या होता है? This is called apparent velocity, K is, K पता है ना, coefficient of permeability, coefficient of permeability we take in meter per day, meter per hour और meter per second, meter per day और meter per hour और meter per second means एक यूनिट टाइम में पानी कितना दूर चलेगा, हाउ मच डिस्टेंस द वाटर कैन ट्रैवल इन 1 यूनिट टाइम, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। समझ आ रहा है? पानी ऐसा शुरू हो गया जर्नी, ऐसा चला, यू आर गिविंग 1 मिनट टाइम, 1 मिनट में हाउ मच टाइम द वाटर कैन ट्रैवल इन द गिवन 1 मिनट। स्टार्टिंग प्रिपरेशन विद जॉब विद सब्जेक्ट टू गो फर्स्ट, obviously if you want to take technical, geotechnical, environmental, these two are the first to go। if you want non technical you go with aptitude, because aptitude gives you 15 mark, aptitude 15, math 13, again geotech 15, environmental 12। after these 4 then you go with transportation। but when you are preparing for competitive exam na, when you take this kind of subjects, big subjects, you feel time is going on 1.5 months 2 months हो गया, सब्जेक्ट खत्म नहीं हो गया, टेंशन में चलेगा। in such a case along with one big subject you take one small subject like CPM which will be finished 1 week 24 hours, you get 3 marks, or OCF which will be finished in 15-20 days, you get 3 marks। so one big one small अच्छा होता है, get MA obviously correct, get ma। so that time within a unit time, 1 minute 1 hour 1 second or 1 day, how much length, how much distance, it may be vertically horizontally inclined whatever it may be, how much distance the water can be permitted to travel, coefficient of permeability। और I का बारे में बोल सकता है hydraulic gradient, we can say slope of water table, ये hydraulic gradient और slope of water table क्या होता है? क्योंकि सॉइल का अंदर पानी हॉरिजॉन्टली ऐसा ना चलेगा ना, water can travel, for example this is ground, water table exists like this, water will travel like this, so it is not traveling horizontally na, it is not traveling horizontally। so when you draw a straight line, this is the straight line, but your water table exists like this, water droplets are flowing like this, so this height difference hota hai na, delta h, what is the length of travel? L, that is equal to I delta h by L। समझ आ रहा है? when you draw a straight line from the point of journey of travel start, from the point of journey started here, falling down ऐसा fall हो रहा है, so that the difference in height delta h, length of travel L, I is equal to delta h by L। so now what is discharge? KI का जगह में, sorry V का जगह में we can write KI, किया हो गया, देखो किया कार, Q is equal to KI है, किया कार आ गया, देखो बेटा वेलोसिटी का जगह में KI लिख दिया, so ये भी KI into A किया, Q is equal to किया। अरे बाबू
इट इज किया कार ओनली, सुधा गारू, डोंट टेक कैरा अद्वानी, ओके, कैरा अद्वानी नहीं, किया कार ओनली। अरे देखो हम किया कार बोलने के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं आ गया, तो इसे कैरा अद्वानी इतना आ रहे, देखो देखो बच्चे लोग से। चलो नाउ दिस वी सेड अपरेंट वेलोसिटी ना, ये अपरेंट वेलोसिटी क्या होता है, सुनो, ये अपरेंट वेलोसिटी क्या होता है, वाटर फ्लोइंग फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, पानी फ्री फ्लो में चलने का टाइम पे। ऐसा पानी फ्री फ्लो में चल रहा है क्या, वाटर इज फ्लोइंग फ्रीली है क्या, ऐसा बहुत खुशी में चल रहा है क्या पानी, बोलो बेटा, ऐसा बहुत खुशी में चल रहा है क्या पानी, अरे पानी तो चल रहा है सॉइल पार्टिकल का पोर स्पेसेस का अंदर, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो खुशी, सॉइल ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर, वाइड्स का साथ साथ में चलेगा, इनका अंदर चलेगा, वाइड्स का साथ साथ में चलेगा, इट इज नॉट फ्लोइंग फ्रीली, इट्स नॉट फ्लोइंग फ्रीली ना, सो ये फ्रीली फ्लोइंग पानी नहीं, इट्स अंडर वाइड्स, सो इनके लिए एक्चुअल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा वीए, एक्चुअल वेलोसिटी लिखना पड़ेगा वीए, which is equal to apparent velocity by porosity, apparent velocity by porosity va, actual velocity va is apparent velocity by porosity। so अब तो क्या होता है क्यों ना, किया अपॉन n मींस एक्चुअल डिस्चार्ज पूछ रहे बेटा सुधा, एक्चुअल डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहे, एक्चुअल डिस्चार्ज, सो किया अपॉन n मींस नो कैरा अद्वानी, ओनली गेट, नो नो बोल रहे, कैरा अद्वानी के बारे में सोचना मत, नो बोल रहे, ओनली गेट, दिस इज एक्चुअल, एक्चुअल डिस्चार्ज। हाँ उधर बात करेंगे, ये जियोटेक्निकल में इनको बोल रहे हैं सीपेज वेलोसिटी, करेक्ट नवनीत, सॉइल में वो सीपेज वेलोसिटी होता है ऑब्वियसली, इधर हम एक्चुअल वेलोसिटी बोल रहे हैं ना, सॉइल में परमिएबिलिटी चैप्टर इज देयर ना, सॉइल में परमिएबिलिटी चैप्टर, इन द परमिएबिलिटी चैप्टर वी कॉल इट एज सीपेज वेलोसिटी ऑब्वियसली। आप तो हमसे भी किया ना, यू हैव डन विद मी ओनली ना जियोटेक नवनीत गारू, सो नो इश्यूज, सीपेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी सेम है, क्लियर गाइस, नाउ वी हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, क्योंकि वो वेलोसिटी को हम लेंथ ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस, सॉरी लेंथ ट्रैवल्ड बाय टाइम बात करेंगे, देन वी हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ वाटर विद इन द सॉइल, 1 मिनट, we are talking velocity is equal to distance traveled by duration, velocity is equal to distance traveled upon duration, L by T, L by T, now that L by T what happened, L by T is equal to Ki, sorry Ki, if it is actual Ki by n, so the question is regarding time, what is the time taken by the water to travel, time taken by the water to travel, L by Ki, L by Ki, T is equal to NL by Ki होता है ना, L by Ki और NL by Ki, समझ आ गया बाबू, time taken by the water to travel from one point to other point, one well to other well, one well to other well, one location to the well, time taken by the water to travel from one well to other, one location to other, I क्या होता है, delta H by L, so you can write now T is equal to L square upon K delta H, हो जाएगा ना क्वेश्चन एक स्टेप में, T is equal to L square upon K delta H, NL square by KH, NL square by K delta H, time of travel, NL square by K delta H और L square by K delta H, समझ आ गया, नहीं होगा छोड़ दो, डायरेक्टली भी सॉल्व करता है हम, we can take the derivation in the question and also we can solve if you are unable to remember formula, डायरेक्टली भी सॉल्व करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, it is possible to solve the question directly also, no worries regarding it, NL square by K delta H और L square by K delta H, कोई दिक्कत नहीं, we first derive velocity then substitute and you can get the time also, length by time, completed अभी तक, चलो two observation wells penetrating into a confined aquifer, देखो आपको कभी wells दिया, well is completely related to hydrology, that question well penetrating obviously we take under, if you take a tracer in the soil they will talk or something, then you think about soil mechanics, two observation wells penetrating into confined aquifer located 1500 apart in the direction of flow, so this is well 1, this is well 2, well 1 well 2, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है 1500 मीटर होता है, 1500 मीटर, हेड्स ऑफ 50 मीटर एंड 25 मीटर इंडिकेटेड है, देखो इधर तो हेड होता है 50 मीटर, इधर तो हेड होता है 25 मीटर, सो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, डेल्टा H 25 मीटर डेल्टा H, water is coming like this, water flowing like this, okay, L is 1500, coefficient of permeability 30 meter per day, K given, porosity 0.25 n, time of travel of inert tracer, time is equal to NL square by KH, NL square by KH 0.25 into 1500 square 30 into 25, एक स्टेप में तो आ गया आंसर इफ यू नो द फार्मूला, नहीं होगा हमारे पास K delta H and L are there, first we get velocity and after that we go with finding the time,
So this is simplest shortcut. I will tell you that method also. So first we have to write I. I is equal to delta H by L, 25 by 1500. Now velocity, okay, 1 by 60, very good. Velocity is Ki by N, 30 by porosity given, 0.25 into 1 by 60. What is velocity you are getting? 2 meter per second. Sorry, 2 meter per day. Now time is equal to L by V, 1500 by 2, 750 days. So whatever easy you can follow, that is up to you. Okay. First I, then velocity, then time, or else single formula NL square by K delta H. That is up to you. आपको क्या आसान होता है, क्योंकि कुछ लोग को फार्मूला रखना मुश्किल होता है, इतना फार्मूला रखना. This one diagram, fill गाड़ो. Only 1563 student. Only 1563 क्यों again? Those are toppers. Grace marks. अरे इनको भी grace marks नहीं. Those who got 720, 720 A1 वो भी देना पड़ेगा ना. पूरा कैंसिल करके एक बार कंडक्ट करो, अच्छा होता है. Why are taking hasty decisions? Why they can give only 1563? हर एक स्टूडेंट को कंडक्ट करो, पूरा कैंसिल करो, हो जाएगा. There is no discrimination, no partiality, no discrimination. हाँ, 100% ट्रू. अब तक गेट का बारे में कोई क्रिटिसिज्म कुछ नहीं मिल गया ना. हाँ, ईएससी भी अच्छा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस भी अच्छा है. पंद्रह गेट एग्जाम दिखता है बाबा. चलो कंप्लीटेड हो गया. देखो कन्फाइंड एक्विफर 15 मीटर कांस्टेंट थिकनेस सैंडविच बिटवीन टू एक्विफ्लूड्स एज शोन इन द फिगर. हमको ये पूरा ना चाहिए, हमको लेंथ चाहिए 2500 मीटर. वेरिएशन चाहिए 55.2 34.1. डेल्टा एच बोलो 55.2 minus 34.1. क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन ओनली फिल करो. क्वेश्चन ओनली डेल्टा एच 21.1. The heads indicated by piezometer respectively, hydraulic conductivity K value 80 meter per day, porosity 0.25, distance 2500, time taken N 0.25, 2500 square, hydraulic conductivity 80 into 21.1. हम क्या करेंगे, इतना बड़ा पिक्चर देख के, डेटा देख के फंस जाएगा, टेंशन में चलेगा ना हम. We go in tension by seeing all the things. And this is extra. Confined aquifer thickness 15 meter. This is unnecessary data. Confined aquifer thickness. Wait. रुको बेटा please. हाँ, piezometer P, piezometer Q. Okay. ये तो head. Correct only. No need of thickness. Thickness तो ना चाहिए हमको. Only head difference भी होना चाहिए बस. चलो. How we write question during class? आपका पास तो PYQ बुक तो होना चाहिए बेटा. पहले you take that PYQ book, you write GATE 2019 वेला हाइड्रोलिक्स, बस सॉल्यूशन लिखो. PYQ बुक में ये है ना, GATE 2019 वेला हाइड्रोलिक्स क्वेश्चन. ये डेटा लिख के मैच करेंगे, हो जाएगा. नहीं होगा PDF डाउनलोड करो, एक साथ में रहेगा. So I will give you PDF हाइड्रोलॉजी GATE PYQ PDF I will give you. PYQ chapter wise I will give you, don't worry. मेरा सब्जेक्ट को तो मैं दिएगा. You need ना हाइड्रोलॉजी GATE PYQ I will give you chapter wise. So वेला हाइड्रोलिक्स 2019 this is only question. ये क्वेश्चन भी आएगा बस. And also I am giving now so that you don't confuse whether it is in hydrology or it is in GT also. What we saw in the class that only will come to your PYQ book. No problem. Don't worry. चलो. So we'll continue tomorrow. तो ठीक रहेगा अभिषेक, कुछ नहीं ज्यादा चाहिए. ये ठीक रहेगा, कोई टेंशन नहीं अभिषेक. प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मिलेगा. ये सुनो बेटा एक बार, आज तो सेशन है, पता है ना, टेस्ट है आज 8 PM. हाइड्रोग्राफ टेस्ट. एवरी स्टूडेंट आई नीड टू सी देयर. एवरी स्टूडेंट आई वांट टू सी यू देयर. आज तो 8 बजे हाइड्रोग्राफ चैप्टर का टेस्ट है. चलो 5:30 तो रहेगा बेटा. 5:30 तो रहेगा. 1 hour only. फिल जी 1 hour only. 1 hour 10 minutes like that we finish at least 10 questions. 10 questions तो करना पड़ेगा बस.